myself to the stream. Okay, hi everyone, welcome back to my channel Unlock Psychology with Shweta, and I hope you all are having a great time. And सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होगा. प्रैक्टिकल की तैयारी किस तरह से चल रही है? दैट्स लाइक माय जनरल लाइक एवरीडे क्वेश्चन दैट आई आस्क. आज मैं आप सभी लोगों के साथ लेकर आई हूँ एक नया सैम्पल पेपर, बिकॉज एज आई प्रॉमिस्ड यू ऑल कि मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि मैं आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड प्रोवाइड कर सकूँ और आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ एक्सपोज करवा पाऊँ. सो ऑन दैट नोट ओनली मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप सभी लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से एक डिस्कशन कर पाऊँ. आज अगेन मेरे जो लाइव सेशंस होने वाले हैं, मैंने ये सोचा है आने वाले टाइम में कि मैं अपने लाइव सेशंस की जो ड्यूरेशन है उसको शॉर्ट करके जो रेलेवेंट कंटेंट है उसी के ऊपर एम्फसाइज करूंगी, सो दैट जो लोग इस लाइव को बाद में देखें वो जो है सिर्फ और सिर्फ उनको ज़रूरत की ही चीज़ मिले और चैट जो है वो कम मिले. सो मेरी यही कोशिश रहेगी. एज यू ऑल कैन सी अपने सामने मैं एक नया सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं जो कि अगेन फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 18 तक 1 मार्क जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आज के पूरे सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी लोगों के साथ. सो मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए, यूं ही साथ में बने रहिए, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक टू हैव अ ओपन डिस्कशन अबाउट ऑल द क्वेश्चन. ट्रस्ट मी गाइस, मैं भी ये सारे सवाल पहली बार ही देख रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं भी इन सवालों के जवाब को गलत दूं. सो आप मेरे साथ मेरी मदद करिएगा और इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करिएगा. सो चलिए, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हिच इज Ratik never got an opportunity to complete his higher education, but the startup idea he gave got selected as the best idea in the country. The judges appreciated his business sense and they promised to finance it. Which type of intelligence has been displayed by Ratik in the given example? The example options are A. Analytical, creative, contextual या componential. उसने अपनी कौन सी इंटेलिजेंस का display किया है? So according to me, he displayed contextual intelligence, which is option number C. So I have Sushil Rajpurohit with me. So hi Sushil ji, how are you doing if you're elder one, and hi Sushil if you're a younger one. So नाम बड़ा solid है, दमदार है, इसीलिए सुशील जी निकला है. So this is how it is. So पहले सवाल का जवाब मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है. आपके हिसाब से अगर कोई और बनता है तो मुझे जरूर से लिख करके बताओ और डिस्कस करो. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए बिना कोई समय वेस्ट किए हुए, just a second guys. हाँ, अगला सवाल. Rosa failed to pass a test and asserts that she have done better only if she had taken into tuitions like other students. Which defense mechanism is she using? मेरे ख्याल से अगेन इसका जो जवाब है नो इसका जवाब है rationalization, ऑप्शन नंबर बी, because she is giving justifications in order to get a better marks. I think बहुत ही सिंपल सवाल है. इसका जवाब किसी ने भी अगर गलत दिया है तो वो एक्चुअली उसको बहुत ज्यादा डीप लेवल पर पढ़ाई करने की जरूरत है गाइस. ठीक है. सवाल तीसरा. Consider the following statement with regard to the structure of personality. Okay. First, it is found at all levels but mostly pre-conscious. Ego is mostly found at conscious level. Superego is totally in the conscious level. Which of the statement given above is the correct one? Number 1 and 2 are correct. 2 and 3 are correct. Only 3 is correct. Only 2 is correct. It is found at all levels but mostly in pre-conscious. I think that's wrong. It is mostly नहीं, मुझे लगता है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है यार. ये बहुत डिबेटेबल है. मुझे एग्जैक्टली इसका जवाब नहीं पता है, तो अगर आपको पता है तो आप मुझे जरूर बताइए. ईगो इज मोस्टली फाउंड एट अ कॉन्शियस लेवल. दैट इज ट्रू. आई थिंक सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू. मुझे लगता है बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है इसका. अगर आपको लगता है कि कोई और जवाब इसका सही होगा तो मुझे जरूर बताओ कमेंट में, क्योंकि मैंने इस बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है.
Rajesh feels lucky that he is often the first choice of his friends when they need help with mathematics and takes pleasure in helping them. Rajesh is high on self concept, self control, self efficacy या self esteem. तो मुझे लगता है कि राजेश की जो है वो सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है बिकॉज ही नोज हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हेंस डी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू. Moving on to the next question for the day, guys, which is the fifth question, जो कि है attending her college graduation ceremony, Asima feels a deep sense of achievement and pride. She is nervous with excitement and cannot wait to receive her certificate she worked so hard for. Hans Saleh Hans Saleh would say she is experiencing distress, eustress, secondary appraisal या exhaustion. So हमें लगता है कि वो eustress experience करिएगा, ऐसा stress जो आपकी आने वाली performance को better कर देता है या improve कर देता है. So yes, the correct answer is eustress यानी कि B. मैं फिर से रिपीट करूंगी मेरे को कि अगर आपको लगता है कि कोई जवाब ऐसा है जो आप डिसएग्री करते हैं तो मुझे जरूर लिखकर बताओ, और अगर आपको जवाब आते हैं तो मुझे कमेंट में ऑप्शन भी लिख के बता सकते हो यार. दैट्स आल्सो गोइंग टू बी अ वेरी नाइस थिंग. वो इंटरेक्शन वाली जो एक चीज है ना, जो मेरे लास्ट क्लोज सेशंस में हो रही थी, वो मुझे बहुत मजा आता है वो सब करने में. तो मेरे लिए भी मोटिवेशन रखोगे तो मैं भी कल वापस पलट के लाइव करूंगी. अगर मेरे लिए कोई मोटिवेशन नहीं होता ना तो देन आई डोंट फील लाइक डूइंग लाइव्स एनीमोर. सो गाइस, दिस इज फॉर यू. Right. Okay. Write on the comment section. Mohit is afraid of getting his first full time job. The coping skill he used are aimed at improving his interview style by practicing daily. What type of coping he is using? Problem focused, emotion focused, both problem and emotion focused, neither problem nor emotion focused. तो हमें ऐसा लगता है कि इसका सही जवाब हो सकता है. Any guesses? Come on, guys. If you guess, I'll be very, very happy. अगर कोई मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब बता सकता है, जो सवाल है, Mohit is afraid of getting his first full-time job. The coping skill he uses are aimed at improving his interview style by practicing daily. What type of coping is he using? So Sushil, मुझे ऐसा लगता है he is using problem focused approach, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जो प्रॉब्लम है जिससे वो घबरा रहा है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है. So I think the answer is option number A. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव ऐसे इमोशन ओरिएंटेड कोई भी तैयारी करने की कोशिश नहीं कर रहा है. रादर व्हाट ही इज ट्राइंग इज कि ही इज वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम व्हिच इज getting a full-time job which is aiming at improving his interview style. So मुझे ऐसा लगता है कि it is a problem-focused approach that he's using. Mohit specifically. Yeah. Thank you. हाँ ठीक है सुशील. I won't call you सुशील जी, though it sounds really fascinating and interesting to me. Next सवाल. Okay, this is going to be interesting. Harshad has recently received a scholarship for studying in a prestigious foreign university for pursuing his post-graduation in management studies. His family, on the other hand, is undergoing a financial crisis and requires him to work full-time in order to fulfill their basic needs. This has put Harshad in a confused state. Harshad is currently undergoing trauma, certainly no, conflicts, hassles या aggression. मुझे ऐसा लगता है कि जवाब जो है conflict या hassle में से कोई एक होना चाहिए. ठीक है, तो हम इसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं. Harshit has recently received a scholarship for studying in a prestigious foreign university pursuing post-graduation management studies. उसको मिला है. His family is on the other hand is undergoing a financial crisis and require him to work full time in order to fulfill their basic needs. This has put Harshit into a confused state. तो मुझे ऐसा लगता है that he is experiencing conflicts, जो कि है option number B. क्योंकि he has to make decision, he has to pick whether to go for higher studies or whether to work full time in order to support the family. So I believe the correct answer is option number B, conflicts that he's going through. Okay. Next option number. Hi Shashank. Okay. Free TV Coca Pagla ko theek kar. Coca Pagla is already fine costing.
Ma'am, I need to link. I need the link of these question papers, please. Sweetheart, I do not have a link to these question papers. These are all a part of my own personal question bank, and इसका कोई भी लिंक कहीं भी तुम्हें नहीं मिलने वाला है बिकॉज ये कहीं अवेलेबल ही नहीं है. सो द पॉइंट इज कि मैं इन्हें प्रोवाइड भी नहीं करा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम वक्त और ये सब नहीं है. सो इट्स बेटर दैट वी ऑल पार्टिसिपेट एंड डिस्कस एंड यू you know exercise your brain cells. So that's going to be the best exercise we could do at the point of time. चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए जो है सवाल नंबर 8. When Lady Macbeth washed her hands repeatedly until they were raw and red, Shakespeare provided an example of which disorder? So I think Lady Macbeth has been facing OCD. So I think इसमें हम सभी agree करते हैं और कोई भी doubt नहीं है because OCD is one of our favorite disorders and the most easiest to understand as well. मिल जाएगा जी ड्राइव शेयर कर दो. मुझे जी ड्राइव शेयर करना नहीं आता है और मैं जी ड्राइव करने के लिए जितना टाइम और एफर्ट चाहिए वो मेरे पास नहीं है. फ्री टीवी कॉस्टी. सो थैंक यू. Given below are two statements. So assertion reasoning based question guys जो कि बहुत ज़्यादा important होते हैं और आप सभी लोगों को इन सवालों का जवाब देना आना चाहिए. इसके लिए बहुत important जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको content के ऊपर command हो. Because अगर content के ऊपर command है तो आपको पता चलेगा कि वो statement जो है correct है कि incorrect है, true है या false है और are they even linked with each other or not. So that's the most important thing to answer the assertion reasoning based questions. So assertion है genetic factors have been linked to mood disorders, schizophrenia, mental retardation, and other psychological disorders. Okay, I think it's a false statement. Reason: many genes combine to help bring about the various behavior, emotional reaction, and both function and dysfunctions. So many genes combine to help bring about our various behaviors and emotional reactions. So इसका सही जवाब जो है वो ये है कि A is false and B is true. Reason being, mental retardation has no connect with genetic factors. Yes, I agree that schizophrenia and other psychological disorders do have. Okay, so this is the correct answer as per my understanding. A is correct. Sorry, A is false and B is true. Shashank कह रहे हैं, ma'am, I have a suggestion. Try doing these sessions from the end of March as psychology is the last exam and most of us are preparing for the other exams right now. As a result, watching is very less. Even I got 19 days gap only for psychology. Okay. All right, Shashank, good suggestion. So maybe after I finish this question paper, I won't do that. गुड सजेशन. थैंक यू फॉर डूइंग दैट. मे बी मैं चैप्टर्स कंटिन्यू कर सकती हूँ बट उसके अंदर पता है क्या मेरी व्यूअरशिप और डाउन हो जाती है. इस टाइम पे फिर भी व्यूअरशिप रहती है बिकॉज पीपल वुड लाइक टू सी दीज क्वेश्चंस. सो या दैट्स द थिंग. बट ठीक है, या आई वुड टेक योर सजेशन टू कंसिडरेशन. थैंक यू फॉर डूइंग दैट. बट चलिए अभी तो आगे बढ़ते हैं. Mary, question number 10. Mary tend to perceive every event as negative. If the phone rings, she thinks it's the salesperson trying to bother her. If it doesn't ring, she thinks nobody cares for her. The negative interpretations are at the root of her interpretation according to the behavioral perspective of normality, social perspective, cognitive perspective या psychodynamic perspective. इससे simple सवाल तो हो ही नहीं सकता था. इसका सही जवाब है cognitive perspective यानी कि point number C. Question number 11. Joseph Wolf developed the theory of systematic desensitization by using the principle of dash. Options are: people cannot be afraid and relaxed at the same time. People will repeat behavior which are rewarded. People will not repeat behavior followed by punishment. And timeout is not effective because it is impossible to eliminate all the reinforcements. So इसका जो सही जवाब है वो है option number A, यानी कि people cannot be afraid and relaxed at the same time. So one force has to be a stronger force and the other has to be the weaker one, which is going to you know principle of reciprocal inhibition, which is that it is going to inhibit the weaker force. So yeah, hence the option A is the correct answer. 12th question guys, assertion reasoning based है. फिर से assertion दिया है कि rehabilitation is required to empower the patient to become a productive member of the society to an extent possible. Okay, that's a correct statement. In severe mental disorders such as schizophrenia, reduction of symptoms may not be associated with improvement in the quality of life.
Okay, so I think they're both correct, but they're not related with each other. Okay, so both A and R are true, but R is not a correct explanation to A. So D is the correct answer to this question. Okay, so next, whenever Rohan feels stressed, hi Divyansh. So whenever Rohan feels stressed out due to work pressure, he is going out for drinks with his friends. He would feel relaxed after being drunk, and after a while, this became a pattern. He developed the habit of drinking alcohol even for a minute stressor, because he would feel relaxed after drinking. This antecedent factor in Rohan's life would be addiction to drinking, disinterest, work-related stress, yeah, relaxation. Uh, I think addiction to drinking. इसका जो सही जवाब है वो है एडिक्शन दैट ही वांट्स द सिमिलर amount of alcohol in order to experience the relaxation, and sometimes more than that as well. So I believe the answer is A, which is addiction to drinking. सवाल बढ़ते हैं नंबर 14 की तरफ, जो कि होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग. Neeraj has always struggled to get a decent score in mathematics despite the efforts he put in. His parents always criticize him by saying that he's just doesn't work hard enough and therefore lags in the subject. Because of the unending criticism and nagging, Neeraj decided not to make any effort for the subject, and that no matter what he does, it will lead to negative remarks, and he is experiencing self fulfilling prophecy. Yani ki whatever people think of them, they just agree and they just accept it. So that's called self fulfilling prophecy. बहुत ही good, मतलब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे से बताया गया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला सैम्पल पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अगला सवाल. अन्ना, the head girl of a school gives more opportunities to the member of the red house than those of a blue and green house. This is because she feels very less capable. They're less capable. She even ignores the advice of her teachers to give equal opportunities to all the houses. Which strategy will help in handling this prejudice? So, सवाल है उसके options है. Highlight the group identity rather than the individual identity. Increase her interaction with the members of all houses. Keep all the red house member higher in power status, creating an environment for all the house meeting in a competitive rather than a cooperative context. तो ये बहुत ही confusing इसके options है, but मुझे ऐसा लगता है कि option number B is certainly should be right. अगर आपको लगता है कि कोई और जो है वो सही होगा तो मुझे बताना. Question number 15 is there in the CBSE sample paper as well. उसका सही जवाब क्या है? मुझे लगता है कि B उसका सही जवाब है. अगर आपको लगता है कोई और है तो बताओ यार मुझे. शशांक, do you have the answer key? I mean answer scheme. तो मुझे लग रहा है कि बी है, बट पता नहीं क्या होगा. So I think I've got a good understanding. Thank you. I think I'm capable of becoming a good teacher. So 16वां सवाल. You like your mother. Your mother does not like your pets. You like pets according to Haider. What triad is this theory? So it's so simple. बैलेंस है कि इम्बैलेंस है, तुम्हें वो देखना है कि कितने स्टेटमेंट पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है. सो यू लाइक योर मदर, पॉजिटिव. योर मदर डज नॉट लाइक योर पेट, यू लाइक पेट्स. 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, कौन सा बनेगा? बैलेंस बनेगा कि इम्बैलेंस बनेगा? ये बताओ. So tell me the answer. Tell me the answer whether it's a balance or an imbalance. 2 positive 1 negative. I'm gonna move on to the next meanwhile. I'm not gonna answer this at least. इतना simple है. Hero feels that using a mobile phone when in meeting jeopardizes the individual's ability to concentrate and give inputs. He discusses this with colleagues and hears similar opinion. He thus decides that everyone will keep their mobile at the desk and nobody will be allowed to carry their phone with them when they enter a meeting conference. Identify the phenomena. This is called group facilitation, polarization, similarity, group. So this is called group polarization. When everybody is taking an extreme decision, that's called group polarization. Last but not the least, today's question is again an assertion reasoning based question. Assertion. In behavioral rating, raters may carry biases that influences their judgment.
He क्या है? What is that? I didn't understand. Please explain it again, Richa. I didn't understand your question only. Booklet. What do you mean booklet? Like with what context are you asking, Richa? Please explain your question, dear. असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन मैं लास्ट आज का सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद जिसके जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट में बता दो, फिर एट द एंड मैं सारे सवालों का जवाब दे दूंगी. असर्शन है in behavioral rating, rater may carry biases that influences their judgment of different traits and be influenced by single and favorable trait in behavioral. ठीक है. The situation stress test is used to provide information about how a person behaves under. It's very good. So both A and R are true, but they're not related to each other. That's not an explanation. So इसका correct जवाब है option number E, apparently. So both A and R are true, and R is no. Yeah, H. Both A and R is true, and R is not a correct explanation of A. इसका यही सही जवाब है. ठीक है. सो ऑन दैट नोट मैंने आज सारे जितने 1 मार्क क्वेश्चन थे इस सैम्पल पेपर के वो डिस्कस कर लिए आप सभी लोगों के साथ. नाउ आई एम ओपन फॉर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन केस यू वांट टू आस्क. आई कैन सी रिचा हैज वन क्वेश्चन टू आस्क. शी सेज कि मैम बुकलेट क्या होता है प्रैक्टिकल में? बुकलेट होता है बेटा मैनुअल जो आपको आपकी टीचर प्रोवाइड कराएगी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. आप उससे टेबल्स देखोगे, रिजल्ट टेबल देखोगे, नॉर्म टेबल देखोगे, रिलायबिलिटी देखोगे, वैलिडिटी देखोगे, इंस्ट्रक्शंस देखोगे. सो वो कहलाती है बुकलेट इन योर प्रैक्टिकल्स. ठीक है. सो इसके अलावा और कोई सवाल है? मैं लास्ट के 2 मिनट आप सभी लोगों का और इंतजार करूंगी. जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके बाद फटाफट हम आज का लाइव सेशन ऑन अ वेरी गुड एंड स्पॉटिंग नोट एंड करेंगे. ऑल्सो गाइस मैं अपनी प्रैक्टिकल्स किस तरह से लिखते हैं वो भी जल्द से जल्द अपलोड कर रही हूँ. सो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट. मैम हु टू राइट इज प्रैक्टिस टेस्ट. हु टू राइट? Sorry, I didn't get the question. Is gaming? I'm gonna score 30 on 30. I'm super sure of that. I'm super duper sure of that. So Shank, you're gonna do wonderful, and I'm there with you in case you need any help from me. Um, you want to write the practice paper, you can do it, and then get it checked from your subject teacher in school. That's gonna be one of the best way to do it. Yes. You help a lot in my psychology practical with your videos. Thank you so much. Most welcome. And I think that's what we do. That's what makes me happy. Speaking with you all, talking with you all. जब यहाँ पे comment चलते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है. तो it's a wonderful feeling. Richa, you can contact me on my Instagram handle, which is @unlockpsychology. मैं यहाँ पे दोबारा लिख भी देती हूँ सबके लिए. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन माय डीएम्स इन देयर. और जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस. सर्टेनली अगर वो ऐसे सवाल हैं जो कि ओवर अ चैट दिए जा सकते हैं, देन आई विल बी ओके टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन. इन केस यू नीड मोर डिटेल्ड डिस्कशन और ये सब, देन आई थिंक यू विल हैव टू गो फॉर सेशंस विद मी. सो वो एक अलग फिनोमेना है. और ईमेल मेरा है unlockpsychology3@gmail.com. ठीक है. So this is my Instagram. Oh, this is my email ID. So same unlock psychology. उसके पीछे एक न्यूमेरिकल लगा लो 3@gmail.com. That's my email address, Richa. ठीक है. So I believe that we are sorted for the day, and हम लोग जल्द से जल्द दोबारा लाइव मिलेंगे. कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट लाइव सेशन में प्रैक्टिकल्स के ऊपर रख पाऊं. एंड क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइम पे कई बच्चे जो है प्रैक्टिकल की तैयारी ज्यादा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर मैं लाइव सेशन रखूंगी तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा और आपको बेनिफिट करेगा. सो आई थिंक आई एम गोना कीप माय नेक्स्ट सेशन ऑन प्रैक्टिकल्स. एंड आपके जितने भी सवाल हैं आप उन सभी सवालों को एक तरफ इकट्ठा करके रखो एंड बम्बार्ड मी विद दोस क्वेश्चंस. आई रियली वांट दैट. ठीक है. So, chalo. Ma'am, will you come live please before 18th? Yeah. I will come live day before, day after tomorrow only, in fact. और कल अगर टाइम मिला तो कल, नहीं तो परसों. मोस्ट प्रॉब्ली कल ही टाइम मिल जाएगा तो कल ही मैं लाइव आऊंगी. तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है. आई एम सर्टेनली गोना कम लाइव.
सो 18 तारीख का वेट नहीं करना पड़ेगा, कल ही हो सकता है। ठीक है? So on that note, I'm going to take a leave from here and I'm going to see you all super soon. As I always say, take care. Bye bye.